Welcome back, ladies and gentlemen. It was an attack on the police force that shocked the nation. On the intervening night of 3rd July last year, a team of Uttar Pradesh police was targeted by dreaded gangster Vikas Dubey and his men. 8 brave policemen succumbed to injuries. But their courage was conveniently forgotten when Dubey was killed a couple of weeks later trying to escape the cops. The opposition parties across the nation raised a hue and cry, calling it a staged encounter. But today, ladies and gentlemen, a judicial commission formed at the direction of the Supreme Court has set the record straight. In a frankly worded observation, the panel has said that the evidence supports the police's version of the incident and that there is no proof available to back the possibility of a fake encounter. But the opposition, much like that day when Dubey was killed, is still unwilling to accept the fact that what transpired in the wee hours that day was an attempt to stop a hardened criminal from fleeing the cops. Listen in. विकास दुबे की रिपोर्ट आने के बाद अब ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ चल रहा है। तभी उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी विकास दुबे को पुलिस के आने की भनक पहले ही पता चल गई थी कि वो जग जाहिर था वो इनकाउंटर जो है। और खुद पुलिस महकमे से ये चीज़ें इनिशियल स्टेज पे भी आई थी कि जो है इसमें पुलिस ही मुखबिरी की थी पुलिस की। तो ये तमाम मुद्दे हैं, मैं ये चाहता हूँ इसको साफगोई से और सही तरीके से जनता के सामने पेश किया जाए कि ब्राह्मण समाज के विकास दुबे थे तो इसलिए उनका एनकाउंटर किया गया। So, ladies and gentlemen, the legitimate question on the news are tonight. Why reject even a judicial panel report? That's the question and the debate. Dubey encounter, clean chit. That's the hashtag and the debate on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate along with Nupur Sharma, Shehzad Poonawalla, Anurag Bhadoria and Sujata Paul is Sajjan Singh, member of the BSP Legal Cell. Sajjan Singh जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास कोई तथ्य हैं जिसके बिना पर आज ये जस्टिस BS चौहान की जो रिपोर्ट है और उन्हें अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अब उनकी रिपोर्ट भी आप मानने को तैयार नहीं है? ये अजीब सिलसिला है कि वहाँ हाई कोर्ट बंगाल में अगर 5 जज बेंच रिपोर्ट देती है, ऑर्डर देती है, वो भी नहीं मानना, हमें सूट नहीं करती तो हम नहीं मानेंगे। अब जज की जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसे भी नहीं मानना। इसके अलावा कोई तथ्य हैं आपके पास? Before I come into the question, Navika ji, may I correct my name, Sajjan Singh. Now the report. You have to go through the report in toto, not by piecemeal. Justice Chauhan's report has clearly stated the fact about the nexus between the police personnel and the criminals. And this encounter is the worst type of human right violation is the extrajudicial killing. Merely by based on the report which is tabled on the floor of the assembly, the BJP cannot take political mileage. Actually, BJP want to take the political mileage on the issue of the deteriorating law and situation while saying that, that they are justifying this encounter. They are taking advantage of the fact that law and order situation is the good in the BJP government, but in the ground report, Navika ji, your reporter is there in the ground. They may say that law and order situation, the worst law and order situation. If the 2007 sir, and even if I agree with you, sir, even if I agree with you, the point of debate is the report of the panel. Do you agree with the panel when it says that this was not a fake encounter? Simple question, simple सा answer दे दीजिए. No, See the complete report. See the complete report. Clearly, commission has clearly stated about the nexus between the police and criminals, and the kind of feedback that have been given by the government that cannot be ruled out. Still, that has been tabled. But the situation. No, in the nexus between the criminals and police, has Justice Chauhan said that Vikas Dubey's encounter was a fake one? Have they said that or not? Just can I put a question? You can justify
Encounter, you can justify an encounter in the name of the law and order situation, in the name of the deterring the criminals. Can you justify any encounter? The Supreme Court, Justice B.S. Chauhan in the different judgment. I'm not understanding Saran Singh जी, मुझे समझ नहीं आ रहा. मैंने घुमा के सवाल को कई डिग्री घुमा के आपसे पूछा, लेकिन मुझे ये जवाब नहीं समझ आ रहा आपका कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. तो इसीलिए मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछती हूँ. अनुराग भदौरिया जी, जस्टिस चौहान का पैनल कहता है ये फेक एनकाउंटर नहीं था, और जो आपके लांछन थे, चार्जेस थे कि योगी आदित्यनाथ जी एंटी ब्राह्मण है इसीलिए फेक एनकाउंटर कर दिया विकास दुबे का, ये चार्जेस तो अब धरे के धरे रह गए ना. लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, उस जांच में भी कहा गया है कि यहाँ पे अपराधी और पुलिस प्रशासन का मिली भगत भी पता चल रही है, इनका नेक्सस आपस में है, ये मिलके काम आपस में कर रहे हैं, ये भी सच है. इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है. जिस विधानसभा के अंदर में मंत्री, कैबिनेट मंत्री खड़ा होकर बोल रहा है किसी ने माँ का दूध पिया हो तो जवाब दे, इस तरह की भाषा होती है क्या? ये अपराधी की भाषा नहीं तो क्या है? अनुराग भदौरिया, पैनल किस मुद्दे पर था? पैनल इस मुद्दे पर था कि ये एनकाउंटर फेक है कि रियल है. इस पर जो कहा है वो आपने मान लिया, आपने दूसरे सवाल खड़े कर दिए. आपने मान लिया कि ये फेक एनकाउंटर नहीं था, तो आपने मान लिया ये फेक एनकाउंटर नहीं था, तो आज आप योगी आदित्यनाथ से माफी मांगेंगे क्या? आज आप योगी आदित्यनाथ जी से माफी मांगेंगे क्या? अनुराग भदौरिया जी, लेक्चर मत दीजिए इतना, सिर्फ ये बता दीजिए आज माफी मांगेंगे क्या? तो फिर कैसे काम चलेगा? या तो आप बोलो या तो मैं बोलूं. सवाल भी पूछेंगे, बोलेंगे भी तो दोनों का तो जवाब नहीं होगा ना. मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, कोई बोलेगा तो उसमें एनएसए लगा देंगे, जेल डाल देंगे. इसके मतलब तानाशाही नहीं तो क्या, गुंडागर्दी? तो अपराधी खुद ही है ये. नुपुर शर्मा, अब फेक एनकाउंटर पे तो कोई जवाब है नहीं. अब ऑक्सीजन, एनएसए, सेडिशन पर जवाब आ रहे हैं. आप रिस्पॉन्ड करिए. बीएसपी प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं. चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार बढ़ा हुआ है. Now let's stick to the facts, Navika. First and foremost, let's have it clear, if the committee had as much as found it to be an extrajudicial killing, they would have mentioned so in the report and not given the cops a clean sheet. Point number one. Point number two, what the committee has found is the everlasting rot. You know, Navika, I can't speak like this. The everlasting rot in the local administration, in the police and various other departments and their officials thereof, which have time and again ensured that cases and investigations therein are diluted, that bails, if given by the lower court, are never appealed against, and if appealed, there is no veracity and no heaviness in the matter which is appealed against. For that matter, Mr. Bhadoria, who do you think is foolish? Mr. Dubey, Vikas Dubey, happens to be a criminal of the 1990s, had more than 60 cases registered against him. The committee simply says, if he got a bail because of collusion with the local administration and cops, it was never appealed against. Maybe the question needs to be asked of the BSP and the Samajwadi Party, who must have, in collusion with the cops and the local administration, ensured that the appeal against him is not even heavy enough to actually cancel his bail in the higher court. Because Sujata Paul, the fake encounter charge has been proven to be false. Today, do opposition parties owe the Chief Minister of Uttar Pradesh an apology after this? Not at all. After this report by the Supreme Court judge? No, not at all. I will quote from the 824-page report, right? It's 824. Quote, nobody came forward from the public and media to controvert the police version, and no evidence is filed in rebuttal. Richa Dubey, wife of Vikas, filed an affidavit calling the incident a fake encounter, but she did not appear before the commission, unquote. And that is why they added that in such eventuality, no suspicion or doubt can arise about the police's version. Where have they said that this was not an encounter? They have clearly mentioned that there was lack of evidence, and there is fear in people's Finding mind. one, evidence supports police's version of the incident.
Finding 2, injuries suffered by the cops not self-inflicted or fabricated. Finding 3, autopsy clarifies injuries on Vikas matches the police version. No eyewitnesses to back possibility of fake encounter. And finding 5, no evidence available to back possibility of fake encounter. शहजाद पूनावाला सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सिलेक्टिव रीडिंग जैसे कल कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट में थी अबाउट द डिसेंटिंग जजमेंट, वो ही आज हो रही है इस पैनल रिपोर्ट के साथ। देखिए मुझे लगा केवल राहुल गांधी सेल्फ गोल करते हैं, पर उनके प्रवक्ता भी करते हैं। जो इन्होंने पढ़ा ये बताता है कि इनके पास कोई तथ्य नहीं थे, इसलिए टीवी पे हो हल्ला करा, पर जब कमीशन की बात आई तो वहां पर गए नहीं। और ये देखिए आतंकवादी और जो अपराधी है उनका जात धर्म क्यों ढूंढ लेते हैं ये अनुराग भदौरिया। ये अलकायदा के आतंकवादी को मुसलमान कह देते हैं, ये विकास दुबे को ब्राह्मण बना देते हैं। विकास दुबे की गोली से जो मरा वो सीए देवेंद्र मिश्रा, वो ब्राह्मण नहीं था, उसके परिवार के साथ आज कौन खड़ा है? ये बेशरम लोग हैं जो यूपी पुलिस के मनोबल को तोड़ने के लिए और एक अच्छी सरकार जो कानून व्यवस्था पर काम करती है उसको नीचा दिखाने के लिए। और कौन कर रहा है? ये समाजवादी पार्टी, जिसकी पूरी पार्टी के बारे में खुद राहुल गांधी ने कहा था 27 साल यूपी बेहाल, गुंडों की पार्टी ये मायावती ने कहा था कि अरे चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगा, हाथी पर। Ladies and gentlemen, I just want to say one thing. While the report by the former Justice of the Supreme Court does say that there is nothing to prove that this is a fake encounter, the UP government and the UP police should be a little bit worried about some of the other observations. Local police officers patronized Vikas Dubey. That's the one noting there. Local cops humiliated complainants against Vikas. Local police didn't register complaints against Vikas. Local police defied senior authorities to shield Vikas. State never engaged counsel for Vikas's prosecution. Vikas easily got bail orders to evade the law. Total failure of intelligence unit in Kanpur. Intel failed to alert that Vikas had high-tech weapons. Caution not taken in preparation for the raid. Gruesome incident because of poor planning by cops. So somebody, even amongst the cops, was leaking, which is what led to the killing of 8 innocent police personnel. And that's something that will have to be looked into by the UP government, because Vikas Dubey might be an instrument of politics in Uttar Pradesh, but there are 8 families grieving for the loss of their family members, families whose members belong to the police force. They need to think about who's the rat amongst them. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on the News Hour tonight. Have a safe weekend. Be absolutely careful about taking COVID precautions, and I'll see you on Monday. Same time, same place, same channel, and same show. The News Hour at 9. The News Hour at 9 will be right back after the